Hello everyone. So let's begin with our topic, that is Our Changing Earth, Chapter 3, Class 7th Geography. So till now we saw that how the earth has evolved, and also we saw that what were the forces responsible for the changing in the landforms, right? We saw that the mountains are raising, right? And there are also pretty good, like how the volcanoes are erupting and how the earthquakes are formed. We saw about the endogenic and the exogenic forces which affect the earth and the lithosphere of the earth. But today we are going to see these forces, endogenic and exogenic, on their specific basis. So let's begin with it. Stick to us. So here is the earth's movement. As we have learned in our previous video, the earth's movement is endogenic forces and the exogenic forces, right? Endogenic then further classified under the sudden forces, that is the earthquake, volcano and landslides, and the exogenic forces then further classified in building mountains. Exogenic forces, as we saw in our video, that the eruption and the depositional, like the river, wind, sea waves and the glaciers, right? Means हमारे कुछ पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो फोर्सेस होती है दो तरीके की होती है। एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है वो क्रिएशन का काम करती है, राइट? क्रिएशन कैसे करते हैं वो, कि सडन मूवमेंट, मतलब अर्थक्वेक में से जो अर्थक्वेक आया तो उसकी वजह से सडन मूवमेंट होगा एकदम अर्थ पे, मीन शिवरिंग होने लग जाती है अर्थ, तो उसकी वजह से कुछ वो जो फोर्स होती है उसको एंडोजेनिक बोलते हैं और उससे कुछ नया क्रिएट होता है डिजास्टर के साथ में। Volcanic activities also create something new, and the landslides, right? Two with it, building mountains is also an example of endogenic forces, because when the two lithospheric plates if oppose each other or oppose each other, then it will be moved like this and it create a mountain. Means दो जब lithospheric plates आमने सामने ऐसे टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा कि वो दोनों फोर्स कंटिन्यू लग रहा है तो वो ऐसे अपलिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ माउंटेन हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अभी आपको इतना डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट इज ऑफ द 11th-12th ज्योग्राफी, राइट नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, राइट? और जब हम बात कर रहे हैं एक्सोजेनिक, तो एक्सोजेनिक में क्या होता है, इफ़ विंड ब्लो कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो क्या हो रहा है, विंड अपने यहाँ से जो डस्ट पार्टिकल्स अपने यहाँ की जो सॉइल है उसको ट्रैवल करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एंड व्हेन दिस थिंग्स आर ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उससे क्या हो रहा है, इस जगह का जो सरफेस है अलग हो चुका है और यहाँ पे कुछ नया बिल्ड हो चुका है। सेम एज रिवर्स भी करती है, जब रिवर्स मूव फ्रॉम द प्लेन्स, राइट, तो वो क्या होता है, वो वी नो दैट कि जो गंगा वैली है वो माउंटेन से फर्टाइल सॉइल लेके आती है, राइट? फर्टाइल सॉइल अपने साथ में लाती है, दैट वाज डिपॉजिटेड ऑन द गंगा प्लेन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो वो कैसे होता है, बिकॉज रिवर क्या करती है, जब मूव करती है तो वहाँ पे आसपास जितना भी सॉइल और फर्टाइल मटेरियल्स होता है उनको साथ में लेकर ट्रैवल करती है, एंड जब वो फ्लैट जो इवन फ्लैट सरफेस आ जाता है तो उस जगह पे उन चीज़ों को डिपॉजिट कर देती है। The same is done with the sea waves and the glaciers. Sea waves also helps in creating something new, and glaciers also help in creating something new. So these are the two kinds of forces, right? Just we have to remember this thing, not to utilize your brain or not to use your brain for how these forces have evolved, what are the concepts behind it, what are the things. If you want, I can explain you, right? So if you want, then you can say me, then I will explain you regarding this. But till now, just you have to remember that there are two kinds of forces, that is the endogenic and the exogenic, right? Now let's move to see how these sudden forces of endogenic forces affect the earth, right? How they are evolved, what they create actually, right? Because as per I said, they are creating forces, they create something new. So what they create, right? So learn about the endogenic forces. Okay, so you can see over here, it is the pretty good descriptive picture of a volcano, right? A 3D image of a volcano. So there are certain things that you have to remember and you have to analyze those, because these are a descriptive diagram, right? This is a descriptive diagram, so you don't have to remember everything which is mentioned over here as per your knowledge or as per your class. But
just remember certain things like, as I am labeling those, मैग्मा चैम्बर, दिस इज द मैग्मा चैम्बर, जहाँ पे पूरा मैग्मा इकट्ठा रहता है ना वॉल्केनो के नीचे, राइट। जैसे हमारी वाटर का टैंक होता है हमारे रूफटॉप पे, सेम एज ये वॉल्केनो का टैंक है, यहाँ पे पूरा मैग्मा स्टोर्ड रहता है। तो वी कॉल दैट एज, जैसे हम उसको वाटर टैंक बोलते हैं, लाइक दिस वी कॉल इट मैग्मा चैम्बर, राइट, कि इसके अंदर मैग्मा रहेगा। एंड आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट द मैग्मा चैम्बर, व्हेन द lava is inside the earth we call it as magma, and when it is outside we call it as lava. You can see the picture में mention किया हुआ है, वो जब लावा बाहर आ रहा है ऐसे फ्लो कर रहा माउंटेन से, तो क्या हो रहा है, इट इज टर्न्ड इनटू लावा। और जब वही चीज़ अंदर थी अर्थ के सरफेस के अंदर थी, वी कॉल्ड इट एज मैग्मा। जिस पाइप से, यू कैन सी दिस पाइप, राइट, जिस पाइप से ये बाहर आते हैं, मीन्स जिस वे से ये मैग्मा चैम्बर में से मैग्मा कम्स आउट एंड फ्लोज ऑन द सरफेस, दैट पाइप इज नोन एज वेंट। लाइक यू कैन सी दिस, ये जो पाइप यहाँ पे दिख रहा है, इस पाइप को हम बोलते हैं वेंट। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर, कार्टर। कार्टर क्या होता है, जो अपर मोस्ट सरफेस ऑफ द वॉल्केनो जो होता है, सबसे टॉप वाला जो सरफेस का वॉल्केनो होता है, मीन्स जो ओपनिंग होती है ना ऊपर ही ऊपर की, लाइक जैसे ये है, तो ये क्या हो गया, वेंट। और ये जो ऊपर का ओपनिंग है, राइट, इस ओपनिंग को जो हम बोलते हैं कार्टर, ये सबसे ऊपर आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज कार्टर। सो एज पर आवर क्लास नॉलेज, दिस आर द थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, कि व्हाट इज मैग्मा चैम्बर, व्हाट इज लावा, व्हाट इज वेंट एंड व्हाट इज कार्टर, राइट। rather than this, the slate, dike, lecholith, and these are not of our class, right. This knowledge, if you want to read, then you have to read this in the 11th and 12th, because this is of higher standard knowledge. So right, just now we have to remember that the magma chamber, lava, vent, carter. If you want me to explain each and every part of this, right, if you want me to explain that how these movements arise, कि मैग्मा कैसे, मतलब ये कैसे मैग्मा चैम्बर बनता है, मीन्स कैसे वॉल्केनो इवॉल्व होते हैं, कैसे अर्थक्वेक आते हैं, इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस ऑल्सो आई कैन डू इट, बट मेंशन इन द कमेंट, राइट। अगर आप कमेंट में मुझे लिख के बता देंगे कि सर हमको ये भी समझना है, देन आई विल क्रिएट अ न्यू वीडियो ओनली ऑन दिस टॉपिक, राइट। For the sake of our class, our standard, just we have to remember, the one is the carter, the topmost opening of the volcano, the vent from where the magma is coming out, the magma chamber where the magma is stored, and the lava when this magma comes out of the volcano, we call it as lava. So this was the short description of how this sudden movement or the forces affect our earth's surface, right. So this is the one. Then the next is earthquake. This is the short diagram to explain the earthquake, right. You can see over here there is a quite good number of labelings over here, right. You don't have to remember each and every labeling, just I am giving you certain things, just remember those. First is the focus. Focus वो पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थक्वेक अराइज होता है, मीन्स जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक स्टार्ट होगा ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट, वो ओरिजिन पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फिर जो उसकी वेव्स निकलती है, मीन्स जब अगर जैसे हम देखते हैं सी वेव्स, वैसे ही जब अर्थक्वेक स्टार्ट होता है तो उसकी जो वेव्स निकलती है, द वेव्स कमिंग आउट ऑफ हिम, वी कॉल दोज वेव्स एज सेस्मिक वेव्स, राइट। एंड जस्ट ऑल्सो रिमेंबर this is the epicenter. Epicenter is the part just parallel to the focus. जैसे अगर यहाँ पे अर्थक्वेक इवॉल्व हुआ है, जस्ट इसके ऊपर अर्थ सरफेस पे जो भी पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे एपिसेंटर, राइट। जैसे ये फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट है, वी कॉल दैट इज एपिसेंटर. सो दीज आर द थिंग्स, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस मच फॉर द earthquake. Right, now go with the theory. When the lithospheric plate moves, the surface of the earth vibrate, and the vibration can travel all around the earth, and this vibration is called earthquake. Okay, तो जैसे मैंने I explained you how the mountains are evolved. माउंटेन कैसे, जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स ऐसे आमने सामने टकराती है and then they uplift, and when they are uplifting, so it is the creation of mountain. But ऐसा भी तो हो सकता है कि दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स खाली ऐसा पास से ऐसे गुजर रही हो, राइट। वैन जब वो ऐसे पास से ऐसे निकलेगी, उससे क्या होगा,
वाइब्रेशन होगा, राइट, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और वही वाइब्रेशन और वही फ्रिक्शन लीड्स टू द earthquake. Then what is the next? The plate in the crust, the place in the crust where the movement start is called focus. क्रस्ट के अंदर जो प्लेस होती है उसको बोलते हैं फोकस, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है. एज आई टोल्ड यू, ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज फोकस. वो कहाँ पे होता है? क्रस्ट के इनसाइड. द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर. ऐसे ही एक्सप्लेन यू, फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट होगा दैट विल बी नोन एज एपिसेंटर. वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज अ वेव्स. एपिसेंटर से ये वाइब्रेशन ट्रेवल करना पड़ता है. एपिसेंटर से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है ट्रेवल करना कहाँ पे? सरफेस पे. जो अगर ये वेव्स अगर इनसाइड द सरफेस है तो हम उनको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स. जब ये आउटसाइड चल जाती है तो वो वेव्स ट्रेवल करती है, और वो जो ट्रेवल करना स्टार्ट करती है दैट लीड्स टू द डिजास्टरस एक्टिविटीज ऑन अर्थ सरफेस. सो देन व्हाट इज द नेक्स्ट? द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर. ऑफ कोर्स दिस इज कॉमन सेंस, राइट. अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? उसके पास वाले को. जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा, राइट, जैसे जैसे ये ट्रैवल दूर होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? इसका पावर कम होते जाएगा, एंड दैट विल लीड्स टू लेस डिजास्टरस एक्टिविटी, वी कैन से दैट, राइट. बट जब अगर इसके कोई पास में ही खड़े हुआ सो क्या होगा? डिजास्टर ज़्यादा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा. जो अर्थक्वेक होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, राइट. And as it moves far away from you, then the activities will dilute. So these are the basic features regarding what is the earthquake, how it is created, and this. Then a little bit about the earthquake. That is the types of waves. Remember one thing, earthquake travels in the 3 types of waves. Actually there are 4 types of waves, but as per our knowledge we are only going for 3 types of waves. The first wave is P waves, second is S wave, and the last one is L waves. Alright, so let's start with little descriptive. The earthquake is measured with the machine called as seismography concept, right? As I told you over here, the waves of earthquake is known as seismic waves. The waves of earthquake is known as seismic wave, and the instrument used to measure the earthquake is known as seismography, right? Similar, seismic waves and seismography. So right, remember this, the seismic waves are measured through seismographer. Then the magnitude of the earthquake is measured on the Richard scale. Magnitude means कि earthquake कितना strong है, कितना strong है. highest magnitude होता है 7.0, राइट. सबसे स्ट्रांग होता है 7.0, और उसके नीचे जो एज इट गोज डाउन अर्थक्वेक उतना डाइल्यूट होता जाता है, मीन्स उसका पावर इतना कम होता जाता है. सो राइट, हम उसको मेजर कहीं पे करते हैं? रिचार्ड स्केल पे. बट अर्थक्वेक कहीं पे मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफर पे. देन द अर्थक्वेक ऑफ 0.2 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल. अगर अर्थक्वेक जो वेव्स हमने रिचार्ड स्केल पे अगर हमने चेक किया और वो अगर 0.2.0 आ रहा है तो 2.0 आ रहा है मतलब लिटिल है, मीन्स हमको हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा, नथिंग मच मोर देन दैट. बट देन इफ द अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज द डैमेज एंड फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, मीन्स अगर 5 से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है. साथ में वो वाइब्रेशन हम इफेक्टिवली फील कर सकते हैं, मीन्स जहाँ पे भी आप खड़े होंगे वाइब्रेशन आपको फील होगा. देन द लास्ट, if the earthquake is 6.0 or higher magnitude, I consider very strong as 7.0 is classified as a major earthquake. Means अगर 6.0 अगर 7 तक चले गया so आप मान लीजिए कि like the portion is going to vanish जहाँ पे भी earthquake आया, because as we have saw in our little bit previous years when the earthquake has arisen in the Japan and pretty much good places all over the globe, and what were the consequences of it? The whole area was vanished, right? Everything, every building, every bridge, every car, every human has been vanished from that place. So this is the natural phenomena of earthquake, right? It is disastrous when it goes about the 6. It is eventually disaster above 5 also, but it is not considered because सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर आदमी खड़ा है 6 से अबव या 7 वाला तो उसके सामने 5 तो छोटा ही दिखेगा ना,
बट 5 भी बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो सकता है, राइट. सो नेवर कंसिडर दिस. ओके, देन द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पी वेव्स, जो पी वेव्स होती है दैट वी कॉल दैट एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. पी वेव्स को हम एक चीज़ और बोलते हैं दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. मीन्स वो है कि ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल करती है, दैट नॉट फ्लक्चुएशन, सिर्फ ऐसे जाएगी. देन द एस वेव्स, द एंड द ट्रांसवर्स वेव्स. एस वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स. इट विल ट्रेवल्स इन द फ्लक्चुएशंस, राइट, लाइक ऐसे फ्लक्चुएशंस, ऐसे ऊपर नीचे, देन इट ट्रेवल्स. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एल वेव्स और द सरफेस वेव्स, these waves are considered on the surface of the earth crust, right. वहाँ पे आपको इनको फील करने को मिलेगा. So not to go in too deep, just remember the types of wave L, S and P. These are the types of wave. And what are the other names like the longitudinal, transversal and the surface wave. Just that's it, fine. So this was the small descriptive topic regarding the types of the types of the earth movement, that is the endogenic force and the astrogenic force, right. In the sudden forces we saw the earthquake, volcano and etc, right. So I hope you have clear this concept of how this forces affect. If it's about building something, means the two plates are coming in front of each other. When it's come to disastrous something, when the two plates are moving aside from each other, अगर वो एक दूसरे के पास से निकल रही है तो then it will leads to create a friction, and that friction will leads to create the earthquake. So that's all for today. I hope you got the thing what I want to explain you. If you want me to explain this topics further clearly, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स को, मीन्स अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, दैट ये प्लेट्स कैसे क्या होते हैं, कैसे मूव करते हैं, क्या क्या इनसे क्रिएट होता है और कैसे डिजास्टर्स होते हैं, देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट. देन आई विल नीड टू दैट, सो दैट इट विल इंस्पायर मी टू क्रिएट समथिंग न्यू फॉर यू, राइट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.